नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध परक शिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं, खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। Yes, sir. Yes, sir. Now you can share the paper. ठीक है, आथर मैम देखिए ये पेपर आपका ही है। हेलो, 15/473 पर जो आथर मैम हमसे जुड़ी हुई है, देख के बताइए ये पेपर आपका है, सोशियो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ। आथर मैम अपना हेलो, आथर मैम आप हमें सुन पा रही हैं? 15/473 पर जो आथर मैम हमसे जुड़ी थी, तो वो अब भी जुड़ी हुई हैं। अच्छा, तो उनपे सेकेंड तो वो अपना वीडियो ऑन कर लें और मुझे बताइए कि क्या आप हमें देख। हेलो हेलो, हाँ हाँ अब आपकी आवाज आई मुझे। अच्छा, चलिए ठीक है। जिन आथर महोदय का मैं ये पेपर आपके समक्ष लेना चाहता हूँ, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, उनका वीडियो तो मुझे दिखाई दे रहा है, कृपया मुझे इंगित करें कुछ हेलो हाय बोल के कि आपका आवाज आ रही है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ देखिए, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है मिश्रा जी। जी 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 जी, मैं आपको बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ ये जी 15/473 पर आथर मैम जुड़ी हुई हैं। अगर वो अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए, शायद आपको आवाज आने लगे। जिनका पेपर मुझे शेयर करना है 15/473 पे जो मैम है, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। आथर मैम आपको आवाज सुनाई दे रही है हमारी? कुछ टेक्निकल रीजन से वो माइक अनम्यूट नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है माइक अनम्यूट करिए अपना। कॉल कर रहे हैं हम उनको। नहीं, जो मैडम हमसे जुड़ी हुई है ना, उनका माइक जो है अनम्यूट है, उसको वो म्यूट है, उसको अनम्यूट करिए मैम। आपके माइक पे देखिए रेड कलर का निशान आ रहा है। नहीं है मैम, उसको अनम्यूट करेंगे तभी हम आपको सुन पाएंगे। मैम प्लीज अनम्यूट योर माइक। हेलो, यस यस, हाँ अभी आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ अभी आपकी आवाज हमको सुनाई दे रही है।
Okay, sir. Okay. So हाँ, actually, there are some technical issues. So sorry for don't that. have any don't have any problem. I am just going to share your paper on the screen, और आप उसको Yes, sir. हमारे रिव्यूअर्स के सामने पढ़ के और अपने पेपर के बारे में बताइए, ताकि आपका पेपर एक रिव्यू पद्धति के तौर पे रिव्यूअर्स अपना सजेशंस भी आपको दे सके, कमेंट दे सके कि इस पेपर को अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है Okay, sir. Okay, sir. जी। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि हम लोग एक दूसरे से अपना परिचय नहीं प्राप्त करते हैं इस मीटिंग में, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ पेपर के बारे में जानना होता है। देखिए, पेपर आपका जो फ्लोर पे आया है, हेडिंग दिखाई दे रही है मुझे, ये Yes, पेपर sir. आपका ही है ना मैम? हाँ जी सर, मेरा ही पेपर है। हाँ जी। जी। तो अब आप अपना जी, तो इस पेपर के बारे में फिर आप अपना विस्तृत रूप से बताइए हमारे व्यूअर्स को कि ये पेपर जो लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, इसका क्या उद्देश्य, जो भी आप कुछ बताना चाहें बताइए जी। Okay, okay. Sir, should I start? या डेफिनेटली। Okay. Sir, ये जो पेपर है ये this paper has been written by me and the topic of my paper is socio-economic study of Baspa 2 hydel project in Kinnaur district, Himachal Pradesh. So hydroelectric power projects has always been a source of energy exploited for centuries in different parts of the world. The construction and operation of hydroelectric power projects have always been associated with changes in the social, physical, and biological environment. Although these projects provide economic benefits in terms of electricity, employment, water for agriculture, and industrialization, they also have other negative effects that have been ignored. So basically, this paper, the motive behind writing this paper was we always talk about the positive effects of the projects, but we are not talking about the negative socio-economic problems, which I have tried to I have tried to explore through my study, that what are the effects, socioeconomic effects on a certain community, on a certain area where this project has been established. So the area which I have chosen is this Kinnaur. Kinnaur is a district in Himachal Pradesh. And it's a tribal district. So there are many hydro projects in tribal area of Kinnaur, and this project particularly it is the first of its kind which has been given to private sector. It was the first project in the Himachal Pradesh or in the area itself which has been given to private sector. So this project has been functioning since 2003, and there are various positive and negative effects which are thought to be to the community where this project has been established. So if I'll come to the positive and the negative effects of this project, then what I have found there was, although there are positive effects, but people are acknowledging that employment has been generated, and other small business has been flourished, along with the road connectivity, because that is a tribal area, and for 6 to 8 months the study area receives a maximum of snowfall. Due to that reason, the road connectivity was earlier not that good. So after what happened after the project construction, it was people have found that the connectivity has been better, but also there were responses which showed that they were blaming the project also, because they were saying it is because of these projects that the road connectivity, and the roads has been damaged because of the heavy machines they used to bring to our areas. So there was mixed responses, I can say, when I talk about the positive responses. Although they said that in medical facilities that they are providing us the instruments like X-ray machines and other things to our areas hospitals, but that is, I think, not enough, because in negative effect, one of the aspect I have already mentioned in my paper is that increasing health related disease,
which was also due to the pollution over there, and the people who were working there, they were they were from the other areas, and when they are coming to our areas, maybe some kind of diseases they have already, and some viral disease has been found. So while talking about the negative effects, it was found that most negative effect on social life was found on the traditions and customs, which were earlier very according to their tribal area, but due to the contact with outsider cultures and the people who were working from other areas, other states, who were being there in the projects, it was found that the local people were they were saying that their culture, their social culture practices has been changed now. They are leading a life according to the outer culture, according to the other culture of the area. So there was a major effect on social culture practices, and in the changes, also the change in custom and tradition has been found, because what happens in the tribal area, they have their own customs and traditions, whether in case of marriage rituals, whether in case of other following certain traditions. What was found was, earlier there was no such concept of this going around the fire, which we called in Hindu marriages Sat Fere, and the Varmala, the garland. They all these things were missing earlier. But due to the contact with these outsiders and their wives and their families, they were started doing the such practices. They were now they were putting bindis on their forehead and the other things, which has been largely changed their customs, which they were traditionally following. So next, if I'll talk about the family system, which was earlier was the joint family system, but after coming the projects, what they said was, now the family member get opportunity in the to get opportunity in the jobs, and due to that they financially become secure, and they started leading their nuclear families with their wives and so on. So it was found that there is a greater decline in joint family system in the studied area. Also, the loss of commercial horticulture and agriculture system was also found, because what happened was, earlier it's a it's a traditional society where a majority of the respondents are depending on agriculture and horticulture system, the area under where the area where the area of my study, the main occupational was the apple orchards and sowing of peas, potatoes, and other things. So what happened was, they were saying that after these projects has been commissioned in their area, they have harmed the local climate, and it has affecting their commercial horticulture to varying degrees. Earlier it was in a larger quantities, but after after the construction of the project, it starting declining. So that was a major problem which they have found. Another major negative effect which was found was on the local craft. Especially people from tribal areas are expert in their own local crafts, in weaving products, like hat, muffle, and other things which they used to uh, which they used to sell in the local fairs or in the areas, in the outer areas. But what happened was, now the generation, the younger generation, or the other people were not interested in carrying forward the local crafts. So it was also found as a major impact on this traditional family occupation, which was earlier used to be very prominent in these areas.
So I think health related problems. I have already told you that due to the increasing pollution from blasting around the construction area is the major problem for which they have faced, and they have noted that they are I mean there is a health related problems due to that activity. And other major effect which was found in the social that they responded that the social problems has been increased after the project after the people who were outsider after the contact with the outsider and the after outsider has been coming to their areas, because earlier there was no crime, no theft cases like, and they said that the people from UP, people from other states are been coming, and these incidents has been increasing, that like the crime against women has been all has increased, because earlier there was no such incident found. Although the incidents find was in their own personal issues, but yes, the all these social problems has been increased in the area. So these are the positive and negative effects which I have explained to you, and overall it was found that although there are some amount of positive effects which the projects may generate in the respective area, but the negative effects which has been always been ignored by the policy makers, by the planners, which whom they planned the big projects in the area. So what I have suggested is it's the local people, I think, who should consult uh, before um, before sanctioning such a project. I think the people, villagers are the main who are going to face these I mean problems for the lifetime, because once the project has been made, it is going to it is going to be there for centuries. So the policy makers and the planners must focus on this issue, that their perspective should be asked, and it is more effective if the negative effects has been minimized and the positive effects has been maximized, and more in a environmentally sustainable way. Thank you, sir. One more thing I want to add is, although I have only talked about the socio-economic problems of the hydro projects, but there were also environmental problems which cannot be ignored when we talk about the hydro projects, which I have not discussed in this paper. Definitely, I'm going to write another paper where I will be discussing some environmental problems and some social problems like displacement and rehabilitation. That I will be discussing for some other paper. So this was my paper, and thank you, sir. धन्यवाद मैम, एक अच्छे से पेपर के लिए आपको। बहुत ही अच्छा पेपर Thank you, आपने sir. बनाया है। Thank you, sir. एक ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी जो आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, हाँ जी इसमें सर। देखिए दूसरे नंबर पे ये शायद टू स्टडी द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक होना चाहिए, टू का टी गायब है इसमें। हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये टी गायब है। हाँ जी, मे बी सम टेक्निकल आई मीन प्रिंट इशू। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रूफ रीडिंग। ठीक है, जब कंपोजर ऐसी दिक्कतें आती हैं, एक दो जगह मैंने और भी देखा है, अभी मेरे दिमाग पे नहीं आ रहा है, तो आप इस पेपर को पढ़ के जरा सा ये देख लीजिएगा कि कहाँ पे स्पेलिंग रीडिंग से संबंधित यदि कोई दिक्कत है तो लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो टेक्निकल जो कारण है हमारे जो लोग हैं, रिव्यूअर सर हैं, वो बताएंगे। मैं एक चीज खाली इसमें बताना चाहता हूँ कि जब भी प्राइमरी डेटाबेस का कोई पेपर होता है तो उसमें एक हाइपोथेसिस जो होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब हम कोई प्राइमरी डाटा इकट्ठा किया होता है तो हमें मालूम नहीं होता कि क्या हमें ये तो एक अंदेशा होता है कि हम ये सर्च करने जा रहे हैं, लेकिन जो चीज सर्च करने गए वो ऑब्जेक्टिव सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ ये तो हम बाद में मालूम पड़ेगा, ये तो कंक्लूजन में मालूम पड़ेगा। तो जो प्राइमरी डाटाबेस के पेपर हो उसमें मुझे लगता है कि परिकल्पना की आवश्यकता पहले जरूर होती है। खैर, हमारे साथ प्राइमरी फर्स्ट रिव्यूअर के तौर पे सर जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपके पास आता हूं और पूछता हूं आपसे कि इस पेपर में आपको क्या सजेशन देना है, क्या कमी लग रही है, या पेपर बहुत अच्छा है? सर।
हाँ, देखिए मिश्रा जी, पेपर बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट हैं इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, प्राइमरी डेटा का प्रयोग किया है, तो ये ज्यादा इसको ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से डेटा कलेक्ट किया और हाँ जी सर। किन किन क्षेत्रों में ये गई, और जो सबसे बड़ी बात है कि इसके जो इफेक्ट आ रहे हैं वो यस। ये ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि देखिए उस क्षेत्र को हम लोगों ने अभी नहीं जाना है ना, उस क्षेत्र में गए हैं, तो जैसा पेपर पढ़ करके हम लोगों को लग रहा है कि इनकी स्टडी बहुत अच्छी स्टडी है, और जो जेन्युइन स्टडी है, और एक रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी स्टडी इन्होंने की है, इसलिए पेपर को तो मैं रिकमेंड करता हूँ सर थैंक यू पब्लिकेशन सर, के लिए। थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। अब मैं सेकंड रिव्यूअर मैम के पास चलता हूँ। मैम, क्या कोई सजेशन है आपका? हाँ जी सर, पेपर तो काफी अच्छा करा है इन्होंने, अच्छा खोजबीन करके लिखा है। बस मुझे लग रहा है थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव्स अगर इसमें और ऐड कर लेते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सिर्फ 2 दिख रहे हैं, 3-4 ऑब्जेक्टिव तो होने चाहिए थे कि उनकी लाइफ में, फैमिली में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो प्रोजेक्ट की है उसकी वजह से क्या क्या परेशानियां हैं। थोड़ा सा मतलब 1-2 पॉइंट्स और आप ऐड कर सकते हैं। वैसे काफी अच्छा लिखा है, मेहनत करी है आप बच्चे ने। और हाइपोथेसिस जैसे आपने बताया था, हाइपोथेसिस ये बहुत प्राइमरी डेटा में होनी चाहिए। बस बाकी तो सब सही है, जी, अच्छा लिखा है। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छी बात है मैम। देखिए सर मैम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दोनों रिव्यूअर ने आपके पेपर को रिकमेंड किया है पब्लिकेशन के लिए। ठीक है, बस सोशल रिसर्च फाउंडेशन के तौर पे, क्योंकि कई बार मेरी लोगों से डिबेट होती है जी सर। कि इसमें प्राइमरी डाटा मतलब परिकल्पना होनी चाहिए कि नहीं होनी यस सर। चाहिए। तो मैं हर बार कहता हूँ कि भाई, कोई भी जब आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो आपको पहले से रिजल्ट नहीं मालूम हाँ होगा। जी, हाँ जी आप सर। तो उसकी एक परिकल्पना करेंगे, संभावना व्यक्त करेंगे, हो सकता है वो हो और हो सकता है वो ना हो। दोनों हाँ ही जी, केस हाँ में जी। हमारा रिसर्च हुआ होता है। रिजल्ट हाँ क्या जी सर। आता है उससे हमसे मतलब नहीं है। तो इसलिए वहां पे ये होना चाहिए कि हाइपोथेसिस नंबर 1 प्रूवन और नॉट। अच्छा, एक बात हाँ जी, मेरे हाँ और जी। बात आपके करते करते दिमाग में आ रही थी कि हाँ जी, कंक्लूजन में जैसे आपने वहां पे लिखा था कि कुछ पॉजिटिव इफेक्ट लिखे थे, कुछ निगेटिव इफेक्ट लिखे थे, जिसको हाँ उनको जो रिव्यू मतलब जो पॉलिसी मेकर्स थे, उनकी जो हाँ जी, निगेटिविटी थी उस पे जो हाँ है वो जी, जाना चाहिए था। तो मैं सोच रहा था अगर उसको जो उसके कंक्लूजन में इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम अलग अलग कर देते तो हाँ पॉलिसी जी, मेकर्स को साफ साफ नजर आता कि हमको इन इन पॉइंट्स पे जाके काम करना हाँ जी, हाँ जी है सर। ना। क्योंकि वहाँ हाँ हेल्थ जी इश्यूज सर। भी है, रोड रोड वाला भी आपने बताया कि हैवी हाँ जी, व्हीकल्स वाली भी समस्या है। ठीक है, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी, इस तरीके से अगर आप उसको पॉइंट वाइज कुछ कर देते कि टू बी डन और नॉट टू बी डन, कुछ इस तरीके से कि ये होना है ये नहीं होना है, तो शायद ये बहुत हाँ अच्छा जी, पेपर बनता। और पेपर आपका बहुत अच्छा है। ऐसे हाँ पेपर जी, जी आगे मिल के साबित होते मिश्रा जी, हैं। पेपर इन्होंने अच्छा लिखा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राथमिक जो डेटा है उसका प्रयोग करते हुए लिखा है, तो और अपने व्यूज को रखा है, और मैं समझता हूँ कि जी जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप अगर आप देखें तो पेपर बहुत अच्छा लिखा गया है। हाँ जी। थैंक यू सर। जी, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। जो प्राइमरी डेटा मतलब जाके आपने सर्वेक्षण विधि से काम किया, रियल काम हाँ किया जी, है, तो हाँ जी सर। उसमें उसमें लिखा अगर 1% हो सकता है कि प्रेजेंटेशन हो सकता है 1% जी काम सर। निकल के नहीं आया। तो हम्म हाँ जी, आपको बहुत बधाई इस पेपर के लिए। इस पेपर को आगे हम पब्लिकेशन के लिए बढ़ाते हैं। आपसे निवेदन है कि हाँ आप इसकी जी, प्रूफ रीडिंग कर लीजिएगा। और हाँ अपने जी रिव्यू सर। को भी बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि रिव्यूअर्स को कि आप अपने पेपर को रिव्यू का लिंक भर के भेज दीजिएगा ताकि पेपर रिव्यू का सर्टिफिकेट भेजा जा जी सके। अच्छा, इसी बीच हमारे इस मंच पे दूसरे ऑथर भी विराजमान है। पेपर नंबर है 15477। लेकिन चूंकि जूम की मीटिंग खाली 40 मिनट की होती है, इसलिए मेरे पास ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि अभी ये मीटिंग 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो मैम, आपको तो बहुत धन्यवाद। और थैंक अपने यू सर, रिव्यूअर से थैंक कहता यू। हूँ कि सर इस मीटिंग को एंड करके तुरंत हम नई मीटिंग पे जुड़ जाते हैं ताकि जो दूसरे लेखक महोदय हैं उनके साथ हम न्याय कर पाए और उनका पेपर भी सुन सके। हाँ सर ठीक बिल्कुल, है ना? दूसरा पेपर भी बहुत अच्छा है, मैंने इसको पढ़ा था, बहुत अच्छी अच्छा स्टडी मैंने की हुई है। अच्छा जी। तो मैं तुरंत इस मीटिंग को ऑफ करके और दोबारा से लॉग इन करता हूं ताकि हमें पूरा समय मिले। और मैडम, अगर आप भी सुनना चाहें तो आपका स्वागत है, अदरवाइज आपका जो है वो पेपर अभी तो अप्रूव हो चुका है। ठीक है ठीक जी। है, हाँ जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू यू थैंक यू मैम, रिव्यूअर्स। थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू यू सर। थैंक यू। वेलकम। ओके। जी हाँ जी, जी। थैंक यू।